Bye-bye. And then different value-added products are and even the sorghum is very small. This is the sorghum one. Indigenous seeds. Local. Bomb job with the bra. Yes, 540. I'm sorry, this has been man. Organization self-help group है
Mangal Self-Help Group. And this is based on, sir, actually we are financing, we are giving the soya milk making and tofu pressing machine to them, to this self-help group, and they are making. Yes, sir, this is soybean tofu. Paneer, sir. Sir, ये self-help group में हमने दिया था soya milk making and tofu pressing machine so that they can earn money from it. पूरे साउथ ईस्ट एशिया में टोफू बहुत Sir, madam. सोया का दही Soya ka dahi. Soy paneer. And this is tofu, ma'am. Paneer. Soy paneer. Yes, sir. Thank you, ma'am. ये हमारा साइड में आ जाओ साइड में आ जाओ तुम साइड आ जाओ साइड में साइड में साइड में साइड में साइड में करो तुम सेंटर वाला साइड सेंटर वाला साइड in local dialect. The divine and recital of Saraswati Vandana also. Manipur Sushri Anusuiya Uikey, Dr. P.S. Pandey, Vice Chancellor, RPCAU Usha Vihar, Dr. Indira Saranthem, Dean College of Agriculture, Iroisemba, CAU Imphal, Dr. Anupam Mishra, Vice Chancellor, CAU Imphal, on the dais. The Honorable Governor of Manipur, a traditional inafi with traditional loom of Manipur presenting to an artist, yes, the internationally acclaimed Radha Krishna painting to the Governor of Manipur. VC sir to felicitate our guest of honor, Shri Govindas Kunthojam, Honorable Minister of Public Works Department and Youth Affairs and Sports, Government of Manipur, will now present a lehiya, the traditional loin cloth of Manipur, a replica of Sagur country, and a gift hamper. Next I request Shri Nishika VC presenting a bouquet, a link to our dignitaries, and a replica of Sagol country. Vice Chancellor RPCAU Usha Vihar presenting a bouquet to serve the traditional loincloth of Manipur country and a gift hamper. Thank you, BC sir. Next I request
CAU Imphal. But I will share of what I know and what I've seen about agriculture. In the year 1978, when I was in class 8, I was fortunate to have visited the Bhakra Dam. It was a sight for me. I was just in class 8, and when I threw a stone below, somehow it vanished in the thin air. It was so high. And on the other side was a huge reservoir, which looked like a sea to me because I couldn't see land on the other side. And I still remember very vividly that the name of the reservoir was called Govind Sagar. It had the floating G-O-V-I-N-D and Govind Sagar. It was massive, humongous. A little boy from Manipur lands up and sees that, so aap samajh sakte ho. So anyway, then comes 1995, when I was in college. I went to visit a friend in Punjab. We were in college together. So I went into the rurals of Punjab. The name of the district is Sangroof, Ahmedgarh, where Khalistan was really active those days. Anyway, what I saw there was, as we went all along Punjab, and I saw the canals going, So now I link up that with Bhakra Dam, which was giving electricity, and then that water was being used for irrigation through the canals which ran length and breadth of Punjab. And that's why I remember why Punjab was called the granary of India. So Punjab was an extremely rich state, so rich that the friend of mine who I was visiting, he was a son of a farmer. And imagine, in the year 1982 or 83 is when Maruti came into India. India just had ambassadors and Fiats, but the man had a foreign car. So imagine how rich these farmers were. So there is a lot of scope in farming. And then we look at Manipur today. I mean, back in Manipur, fortunately or unfortunately, I'm in politics. And we receive so much rainfall. And God has been very kind to us. The water is sweet, the weather is good, and we have abundance rainfall. But the sad part is that, as I see that the irrigation system has yet to develop. I don't know, as a common man, I know there are a lot of technocrats here. I am not a technocrat, but my common sense says that we could, make a lot of reservoirs a little above the valley level on all directions and have canals flowing all across the length and breadth of, if not Manipur, then at least Imphal Valley. And that would bring quite a revolution, because if a businessman or a few businessmen getting rich does not make Manipur rich. The mass is into agriculture, into farming. If our masses, the farmers, can have a double crop rotation or a triple crop rotation, the income will definitely multiply. And when the farmers get rich, we get rich. And of course, this function that I'm here, and I thank the organizers, and it says, inaugural function of International Conference on Natural Farming for Revitalizing Environment and Resilient Agriculture. So I was doing a search on this today morning, and I came across a case study of Sikkim. Sikkim, I think, has reached great heights. They are, I think, the ultimate place in the world when it comes to organic farming. And I learned that fertilizers and pesticides really harm the soil and the future fertility, and of course endangers our own existence. So in 2003, the then Chief Minister of Sikkim had this vision to turn Sikkim into a complete organic state. And so the war went on. He went very meticulously, went through the whole thing, and by 2015 they achieved that feat. Now, if you see, I saw how Sri Lanka really failed in that, because Sri Lanka was in a hurry. And it takes time, and organic is the way to go, and that is what I believe so, because that is able to retain the fertility of the soil. But when I saw the Sikkim program, I think when you go organic, the productivity goes down by 20–50%. That was a challenge, and that challenge was met, I'm sure, with his colleagues and the technocrats there.
But one has to realize that organic farming, the products are far more expensive and far more in demand. So the government assisted in marketing and whatever was required. And today Sikkim is a great state. And in the end, as I finish, there is this, हम कहते हैं कि CAU Pusha Vihar Sri Dr. and which is known to us in a very little quantity, and I feel immense pleasure for being with you on such occasion where international scientists have gathered here to discuss on the day demanding topic, that is natural farming. This unique way of farming is very old practice which our ancestors were following to nourish their family, community, and the whole nation. Natural farming is considered as agroecology based diversified farming system which integrates crops, trees and livestock with functional biodiversity. It has come to my notice that Padma Shri Awadi and an eminent agricultural scientist, Mr. Subhas Palekar, who is popularly known as Krispika Rishi, pioneered the concept of natural farming. He opined that natural farming is growing of plants, crops, and animals without disrupting the wave of diversity and ecology. Such farming is done with least use of external inputs, and it's very close relationship developed by farmer, land and the consumers. While techniques and methods very widely, natural farmers share common roots in reconnecting themselves and their farming process to the art, in learning from nature directly, and in cultivating food that regenerates the health of nature, natural world, and of humanity. The scientists like you have developed so many technologies in agriculture, due to which most of us are getting ample amount of food. But on the other side, due to shrinking area of agricultural land, increasing rate of our population, and heavy use of chemical fertilizers, irrigation water and chemical pesticides, our drinking water, soil and the air are being polluted, and thus pressure on maximizing of productivity is increased. These in turn affect our health. In such situation, we have to look for a better option, and perhaps natural farming is the best. In this 3 days long international conference, I am sure that there will be some way by which per capita availability of food grains maintain, conserve natural resources, biodiversity, and the health of soil. I wish a grand success of this conference. Jai. This is the first book. Today we will be releasing 3 books. The first one is the Book of Abstract, International Conference on Natural Farming for Revitalizing Environment and Resilient Agriculture. Thank you. We extend our heartfelt Shravan and Haldar, Dr. A.K. Mishra. This is the second book. This is the third book which we are releasing, entitled Entrepreneurship Opportunities in Agriculture. Yes, ma'am. मेरा प्रणाम करूं जरी आज मुझे
मुझे कृषि वैज्ञानिक विशेषज्ञों के बीच भारत के सबसे पुराने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल में प्राकृतिक खेती जैसे सामयिक विषय के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आज मुझे उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शीर्षक है पर्यावरण को पुनर्जीवित करने और लचीली कृषि के लिए प्राकृतिक खेती, जो कि आज से 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें महत्वपूर्ण चिंतन होगा। मैं डॉक्टर अनुपम मिश्र, जो कि वाइस चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, और उनकी टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपने ये 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आपने यहाँ पर इम्फाल में किया है। वास्तव में मुझे एक ऐसा महसूस होता है कि इंडिया में हमने सबने देखा होगा कि जितना डेवलपमेंट एग्रीकल्चर की दृष्टि से अन्य प्रदेशों में हुआ है, उतना शायद मुझे नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट की जो जरूरत है अभी हो नहीं पाया है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जितने भी आज एक्सपर्ट्स यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, चूंकि अभी मैंने एग्जीबिशन भी देखा, एग्जीबिशन में पूरे नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट के लोगों ने अपना एग्जीबिशन के माध्यम से वहाँ का जो प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रेडिशनल है, ऑर्गेनिक है, आज उनको कैसे डेवलप और आगे किया जाए। और आज दुनिया में आज जो हमारे लोग हैं अपने हेल्थ के प्रति भी काफी जागरूक हो रहे हैं। आपने देखा है जब 2001 में जब कोरोना का जब ऐसा संक्रमण का समय आया, तो शायद पूरा देश और दुनिया में इस तरह की परिस्थितियों को कभी किसी ने सोचा था, ना कल्पना किया था, और ना जाने कितने लोग अकाल मृत्यु के उसमें चले गए। और तब से लोगों के मन में ये विचार आया कि हम हेल्थ को, अपने आप को कैसे अच्छे स्वस्थ रखें। और उस दृष्टि से भी लोगों का रुझान जो है ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ने लगा, ऑर्गेनिक जो फूड है उसकी ओर। और यहाँ पर मैंने देखा है कि ये प्राकृतिक रूप से ये मणिपुर इतना खूबसूरत है, नॉर्थ ईस्ट ही बहुत खूबसूरत है, और बहुत सारी चीजें ऐसी प्राकृतिक रूप से यहाँ ट्रेडिशनल रूप से भी पाई जाती है, जिसका आज तक जिस तरीके से उत्पादन होना चाहिए था, आज वही चीज जो हिल स्टेशन, हिल एरिया में पाई जाती है, आज चाहे वो आप देख रहे हैं ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि एक मेडिसिन का बहुत बड़ा उनका रोल रहता है। और उन चीजों की ओर जिस तरह की उनकी खेती, हिल स्टेशनों को और कैसे उत्पादन और कैसे बढ़ाया जाए, आज वो एक समय था जब प्राचीन युग में इन सारी चीजों को, जो ज्वार, बाजरा, आपका रागी, कोदो, कुटकी, ये एक समय में वो गरीब व्यक्ति के लिए भोजन माना जाता था। आज वही भोजन आज दुनिया में बड़े बड़े 5 स्टार में इसकी डिमांड बढ़ते जा रही है। और ये चीजों का मुझे लगता है कि खैर जो मैं अपने आप को महसूस करती हूँ, ये चीजों को आज बहुत ही जीवन के लिए, स्वस्थ रहने के लिए इन चीजों का उत्पादन और लोगों को इससे खेती के माध्यम से और कैसे लाभ की खेती बनाया जाए, इस दृष्टि से भी इस पर चिंतन होना चाहिए। मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगी कि गुजरात के गवर्नर द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी चीजें उन्होंने वहां पर
स्टार्ट किया लोगों को, क्योंकि हर किसान उत्पादन करने के लिए उसको नई नई जो फर्टिलाइजर ऐसे केमिकल का उपयोग करके और उसका मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, लेकिन वो हेल्थ के लिए कितना उपयोगी है, कितना नुकसानदायक है, इस पर उन्होंने बहुत चिंतन भी किया और बहुत कम लागत से कैसे उर्वरक खेती और मिट्टी को तैयार किया जा सकता है। उन्हें गाय का जो मूत्र के द्वारा और गोबर और इन चीजों से वो एक उन्होंने रासायनिक बनाया और वो खेती की सिंचाई उन्होंने करके और वहां पर जो ऑर्गेनिक खेती का जो उन्होंने वहां कंसेप्ट दिया है, आज हजारों लाखों किसानों को अपनी खेती में मिलने वाला उत्पादन से काफी लाभ हो रहा है। उन्होंने हरियाणा में भी इसको स्टार्ट किया है। तो मैं समझती हूँ मुझे ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी, आपके सामने मैंने अपनी बात को रखा। और यह सही है कि आधुनिक खेती ने उत्पादन बढ़ाया है एवं देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर भी बनाया है, जिसके फलस्वरूप अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद हम चावल और गेहूं का निर्यात भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अब हम कई समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं। आज हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्षीण हो रही है, सिंचाई के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता पड़ रही है, कीटनाशकों की वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसके साथ साथ जैव विविधता में भी कमी देखी जा रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर नीति आयोग ने सर्वप्रथम इस विषय पर एक राष्ट्रीय परामर्श गोष्ठी को 29 और 38 सितंबर 2020 को आयोजित किया, जिसमें भारतीय प्राकृतिक खेती कृषि पद्धति पर गहन चर्चा की गई, जिसमें देश भर के कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसके बाद 9 अक्टूबर 2020 को दूसरी राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्राकृतिक खेती भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार कर एक टिकाऊ खेती का विकल्प हो सकती है। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में यूजी और पीजी स्तर पर प्राकृतिक खेती के पाठ्यक्रम एवं सामग्री का विकास करने के लिए 31 मार्च 2022 को एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य सचिव इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अनुपम मिश्र को नियुक्त किया गया। विश्वविद्यालय में इसी सिलसिले में पिछले साल 2 दिवसीय गोष्ठी 24-25 जून 2022 को इम्फाल में भी आयोजित हुई थी। हमारे देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना एवं भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति जैसी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा पिछले 4 फरवरी 2022 तक 4980.99 लाख रुपए इन योजनाओं में निर्गत किए गए। हमारे देश में जैविक खेती करने वाले किसानों की कुल संख्या 4.43 मिलियन है। इस साल के कृषि बजट में भारत सरकार ने अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु सहायता देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर देश के विभिन्न भागों में खोले जाएंगे। देश के अन्नदाता किसानों को कृषि निवेशों पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ रहा है तथा खेती में लागत बढ़ने की वजह से किसान को घाटा हो रहा है और शायद यही कारण है कि किसान कर्ज के बोझ से दबता चला जा रहा है। हम
आप सभी जानते हैं कि देश के अनेक भागों में कर्ज के बोझ एवं अपने भविष्य की चिंता से ग्रसित होकर किसान परेशान है, जो कि गंभीरता से विचार का विषय है। प्राकृतिक खेती हमारे देश में अपनाई जाने वाली कृषि की प्राचीन पद्धति है, जो मूलतः गो आधारित है। यह कृषि प्रणाली भूमि के प्राकृतिक स्वरूप में बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता। आज खेती में काफी नुकसान देखने को मिल रहा है, जिसका मुख्य कारण हानिकारक कीटनाशक का अधिक उपयोग। हालांकि तमाम सारे विषयों पर मुझे लगता है कि हमारे और भी एक्सपर्ट और आप सब लोगों ने विस्तार से और आप भी चर्चा करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा समय वैसे ही हो गया है और मैं चाहूँगी कि आप 3 दिन के अंदर जितना भी जो यहाँ पर एक्सपर्ट हैं देश विदेश से और पूरे कुछ हमारे इंडिया के विशेषज्ञ लोग आए हैं, इस विभिन्न पहलुओं पर गहनता से मंथन करेंगे और कुछ ऐसा उपाय निकालेंगे जिससे प्राकृतिक खेती का विस्तार किया जा सके। एक बात और कहना चाहूंगी कि ये मेरा सौभाग्य है, अभी तक मैं 3.5 साल छत्तीसगढ़ प्रदेश की गवर्नर थी, जहां छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा माना जाता है और वो बहुत ही प्रदेश जो है कृषि प्रधान प्रदेश भी माना जाता है, जहां पर तमाम तरह की वैरायटी, शायद इंडिया के अंदर इतनी वैरायटी नहीं होगी धान की जितनी छत्तीसगढ़ में थी। और मैंने बहुत कुछ प्रयास किया। आज प्रधानमंत्री जी का भी जो इंटरेस्ट है कि हिंदुस्तान में ये जो ऑर्गेनिक मिलेट्स के ऊपर उसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। और इस मामले में हमारे मिश्रा जी ने बताया कि वो हिल एरिया में भी काफी कुछ एग्रीकल्चर के दृष्टि से कुछ बहुत कुछ स्टार्ट किया है। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पर लोगों की खेती की आय और अधिक कैसे उनकी बढ़े और उसका लाभ उनको मिले, और इसी तरह से जो ट्रेडिशनल है, जो सारी चीजें हैं उसको बढ़ावा देने की दृष्टि से ये ऑर्गेनिक रूप से ये और आगे उसका उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। और मुझे खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट में माननीय राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी ने मुझे इस मणिपुर का राज्यपाल के रूप में जो दायित्व दिया है। मैं विश्वास दिलाती हूँ इस प्रदेश के लोगों को कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस प्रदेश का डेवलपमेंट और भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के और भी अन्य प्रदेश जो हैं, जितना इन्हें और अधिक डेवलपमेंट होना चाहिए था। और इस ओर प्रधानमंत्री जी का जब से वो आए हैं, और इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बधाई और शासन को देना चाहती हूँ कि जब से आए हैं मैंने सुना है कि आज बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट के काम और अन्य स्टेट में भी शुरू हुए हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी का बात है। अंत में मैं इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अनुपम मिश्रा जी, इनके बारे में बताऊंगी। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जहाँ से मेरा होम प्लेस है मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश, आप भी मध्य प्रदेश जबलपुर के हैं, और ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि रहने वाले आप मध्य प्रदेश के हैं। डॉक्टर अनुपम मिश्रा जी और उनकी संपूर्ण टीम को बधाई देना चाहती हूँ कि वे इस ज्वलंत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इस विद्यालय में करा रहे हैं। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हुए सभी विशेषज्ञों का और विदेश से आए हुए सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इस सम्मेलन को सफल होने की कामना करती हूँ। जय किसान, जय विज्ञान, खगत चले। धन्यवाद।